Hello and welcome to CVR English. You're watching the news. I'm Idris and we begin with the top updates. Speaking at the Global Conference of Meditation Leaders in Delhi, Vice President Jagdeep Dhankar highlighted recent revelations by the US President about attempts to manipulate India's democratic process, stating that the disclosure came from a position of authority. He expressed concern over efforts to tarnish the electoral system. He emphasized the need to trace those who accepted external influence, expose them, and eliminate such interference from its roots. नेशनलिज्म इज अपरमोस्ट। तभी देश के अंदर मेडिटेशन का एक ऐसा वातावरण बनेगा। व्यक्ति मेडिटेट कर सकता है, पर चारों तरफ का वायुमंडल यदि अगर स्ट्रेस का हो, टेंशन का हो, तो एक रास्ता निकालना पड़ता है। और हाल में जो रेवलेशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was so to be moderated, manipulated, to taint purity of our electoral system. I am sure it emanates from a person in authority. Because one thing is right, because that is factual. Amount was given. Amount is not small. चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। उनको बेनकाब करना होगा, क्योंकि भारत तभी शिखर पर जाएगा और जिसकी हम कल्पना करते हैं, और जब सपना नहीं हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत, राष्ट्र धर्म मेरा सबसे बड़ा धर्म है। नेशनलिज्म इज अपरमोस्ट। तभी देश के अंदर मेडिटेशन का एक ऐसा वातावरण बनेगा। व्यक्ति मेडिटेट कर सकता है, पर चारों तरफ का वायुमंडल यदि अगर स्ट्रेस का हो, टेंशन का हो, तो एक रास्ता निकालना पड़ता है। और हाल में जो रेवलेशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was so to be moderated, manipulated, to taint purity of our electoral system. I am sure it emanates from a person in authority. Because one thing is right, because that is factual. Amount was given. Amount is not small. चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया। Now, moving ahead, Varanasi, Uttar Pradesh, addressing the Kashi Tamil Sangam 3.0 program. Union Minister and BJP National President JP Nadda highlighted Prime Minister Modi's efforts in bringing back Singol and reinstalling it in the new Parliament building. He emphasized that this move reflects Modi's commitment to integrating the South international mainstream.
Nadda also explained the significance of Singo, stating that it symbolizes justice for all. Leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPM-J was launched in 2018 with an objective of achieving universal health coverage. It is the world's largest health coverage and health assurance scheme, offering comprehensive secondary and tertiary care hospitalization benefits up to 500,000 per family annually. Recently, the scheme has extended to include all senior citizens of 70 years and above, irrespective of socioeconomic status. More than 610 million beneficiaries, that is about 40% of India's population, are covered under the scheme. More than 86 million hospital admissions worth 1.19 trillion rupees have been authorized under the scheme. In addition to these initiatives, we are focusing on primary and preventive health care through a huge network of more than 175,000 primary health centers, which we call as Ayushman Arogya Mandirs, and which is health and wellness centers, under the National Health Mission also. The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, along with the services provided under National Health Mission and other schemes of Government of India, have led to the decline of out-of-pocket expenditure in total health expenditure from 64.2% to 39.4% in the last 10 years. In alignment with these policies and programs of the Government of India, Apollo Hospital has been at the forefront of providing patient safety, clinical excellence, and healthcare innovation. From leveraging technology for better outcomes to ensure quality-driven patient care, Apollo is showcasing what future of healthcare looks like. India is fast emerging as the healthcare destination for the world through Heal in India. We envision a future where patients from across the globe choose India not just cost-effective treatment, but for world-class solutions. With our skilled professionals, robust digital infrastructure, and a culture of care, we are poised to lead the global healthcare transformation. Platforms like International Health Dialogues fuel this movement, driving conversations, innovations, and partnerships that will define the next era of patient safety and healthcare delivery. Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPM-J was launched. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel inaugurated the 16th National Conference of the AIDS Society of India in Ahmedabad today. On the occasion, he also addressed the gathering, highlighting the importance of awareness, prevention, and treatment strategies in the fight against HIV/AIDS. On the occasion, he also addressed the gathering, પણ એઇડ્સ અને એઇડ્સની શરૂઆત prevention, and અને અત્યારે in the fight. એ બેમાં જેને કહી શકાય કે જમીન આસમાનનો તફાવત થઈ ગયો. બાકી પહેલા તો નામ માત્રથી તમારે લોકો જાણે દ્રુણાની નજર એકદમ જ તમારી સામે દ્રુણાની નજરથી જ જુએ કે જાણે કેટલું મોટું પાપ કરી નાખ્યું હોય એ નજરથી જ લોકો જોતા. પણ આ બધાના સહયોગથી અત્યારે કારણ કે થવાના અત્યારે પણ એઇડ્સ થવા માટેના કારણો જુદા જુદા હોઈ શકે. એટલે એક જ કારણ અને એક જ કારણના અહીંયા ભારત દેશ અને ભારત દેશમાં આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ આ પ્રકારનો રોગ એ જો કોઈને હોય તો એના માટે કારણ કે બધા ઉંમરવાળા વ્યક્તિઓ અને બધા માટે તો આ વસ્તુ જ એટલી બધી એમ કે ભાઈ આ થઈ જ ના શકે ને થવું જ ના જોઈએ એ પ્રકારનું
માનસિકતા આપણી સંસ્કૃતિના આધારે અહીંયા આગળ વધારે પકડ એટલે ભારત દેશમાં અહીંયા સુધી લઈ આવવામાં આપ સૌનો ખૂબ મોટો ફાળો છે કે આજે એ લોકો ઇજ્જતભેર એમની જિંદગી જીવી રહ્યા છે એમાં આપ સૌનો ખૂબ મોટો ફાળો છે એ બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દરેક નાગરિકને શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ મળી રહે તે માટે સર્વસંતુ નિરામયની ભાવના સાથે અનેકવિધ આયોજનો કર્યા છે વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશભરમાં શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય સેવાઓને તો પ્રાથમિકતા આપી જ છે સાથે સાથે ટીબી એઇડ્સ અને કેન્સર જેવી બીમારીઓ સામે લડવા માટે પણ એઇડ્સ અને એઇડ્સની શરૂઆત અને અત્યારે એ બેમાં જેને કહી શકાય કે જમીન આસમાનનો તફાવત થઈ ગયો બાકી પહેલા તો નામ માત્રથી તમારે લોકો જાણે દ્રુણાની નજર એકદમ જ તમારી સામે દ્રુણાની નજરથી જ જુએ કે જાણે કેટલું મોટું પાપ કરી નાખ્યું હોય એ નજરથી જ લોકો જોતા પણ આ બધાના સહયોગથી અત્યારે કારણ કે થવાના અત્યારે પણ એઇડ્સ થવા માટેના કારણો જુદા જુદા હોઈ શકે એટલે એક જ કારણ અને એક જ કારણના અહીંયા ભારત દેશ અને ભારત દેશમાં આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ અહીંયા આગાડી જુદા જુદા હોઈ શકે Addressing a welcome program for Krishna Alavaru on his appointment as Congress Bihar state in charge, Akhilesh Prasad Singh said that if all members of the party's frontal organizations work efficiently, Congress's position in the Bihar Legislative Assembly could improve from 19 to 40 to 50 seats. Added that similar commitment and support from allies are also expected to strengthen the party's presence. अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं पिछला जो हमारा गठबंधन था वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं चाहे वो वाम दल हो राष्ट्रीय जनता दल हो सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया मैं ये नहीं कह रहा और बेहतर हो सकता था लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है हम 9 सीट लड़े थे तो कहने का मतलब ये है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है और इसी को हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा ये मैं बात आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी कांग्रेस कर्मियों को जिन्होंने स्मार्ट मीटर का जब सवाल था सब लोगों ने एक पैर पर खड़ा होकर उस आंदोलन को चलाया और मजबूती से इस तरह से अखबारों में छपता है सभी कांग्रेस Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav during an interaction with industrialists stated that rupees 454 crore has been directly deposited into industrialists' accounts via DBT for MSMEs and small-scale industry liabilities, fulfilling government commitments. He emphasized that several state governments' initiatives
have already been completed, while others are progressing rapidly. He highlighted the significance of the Global Investors Summit in creating a positive environment for the entrepreneurship, encouraging expansion and innovation. He further added that state government fully support these efforts, and for Bhopal, the event will enhance its pride and strengthen Madhya Pradesh's reputation. एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योग के सभी प्रकार की हमारी देनदारी के लिए खासकर उद्यमियों से जो हमारे कमिटमेंट है उसका लगभग 454 करोड़ रुपए की राशि आज डीपीटी के माध्यम से सीधे सीधे उद्योगपतियों के खाते में हमने डाली। हमारी सरकार वचनबद्धता के आधार पर प्रत्येक लिए गए निर्णय के कमिटमेंट के लिए तत्पर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारा बैकलॉग हमने खत्म किया है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ऐसे में हम हमारे साथ जो पुराने समय से जो उद्यमी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना वर्तमान का उद्योग को चलाए लेकिन नया उद्योग भी लगाए, नए प्रकार से काम करे। सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और खासकर भोपाल वासियों को तो भोपाल वासियों के लिए तो मेरी अपेक्षा है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल और मध्य प्रदेश के गौरव के लिए ये आयोजन हमारी गरिमा बढ़ाने वाला है। हम सब अपनी इसी प्रकार की भूमिका रखें। मेरी अपनी ओर से सबका आभार। एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योग के सभी प्रकार की हमारी देनदारी के लिए खासकर उद्यमियों से जो हमारे कमिटमेंट है उसका लगभग 454 करोड़ रुपए की राशि आज डीपीटी के माध्यम से सीधे सीधे उद्योगपतियों के खाते में हमने डाली। हमारी सरकार वचनबद्धता के आधार पर प्रत्येक लिए गए निर्णय के कमिटमेंट के लिए तत्पर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारा बैकलॉग हमने खत्म किया है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ऐसे में हम हमारे साथ जो पुराने समय से जो उद्यमी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना वर्तमान का उद्योग को चलाए लेकिन नया उद्योग भी लगाए, नए प्रकार से काम करे। सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और खासकर भोपाल वासियों को तो भोपाल वासियों के लिए तो मेरी अपेक्षा है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल और मध्य प्रदेश के गौरव के लिए ये आयोजन हमारी गरिमा बढ़ाने वाला है। हम सब अपनी इसी प्रकार की भूमिका रखें। मेरी अपनी ओर से सबका आभार। एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योग के सभी प्रकार की हमारी देनदारी के लिए खासकर उद्यमियों से जो हमारे कमिटमेंट है उसका लगभग 454 करोड़ रुपए की राशि आज डीपीटी के एमएसएमई। Speaking in Thrissur, Kerala, BJP leader V. Muralidharan criticized the state government for its handling of the ongoing Asha workers' strike. He accused the government of insulting the workers and showing a revengeful attitude, while also blaming the finance and health ministries for wrongly attributing the crisis to the centre. Citing a parliamentary response, he stated that over 90% of the dues had already been paid to the state and urged the government to stop hiding its inefficiency. He demanded immediate action to resolve the issues faced by Asha workers, social welfare pensioners and school cooks. Urged the government to stop path for more than a week. But in spite of this situation, the Chief Minister has decided not to call them for a discussion or make any efforts to put an end to this agitation. I would like to demand the Chief Minister to put an end to the revengeful attitude of the state government. Moreover, the state government has chosen to insult the Asha workers. The only reason why the decision to enhance the travel allowances of the special representative of the state government based in Kerala House in Delhi and to increase the salary of the Public Service Commission members and the chairman. At this point of time when the poor Asha workers are agitating for their daily needs
is nothing but an insult to them. Moreover, at this point of time when Finance Minister and the Health Minister of Kerala is trying to put the blame on the Government of India. They say that it is due to the policies of the Government of India that they are unable to pay the honorarium to the ASHA workers. This is not the first instance when the state government has been trying to put the blame on the Government of India, be it the roads, be it the man-animal conflict, or the landslide issue in Wayanad. The inefficiency and incapability of the state government, they are trying to camouflage it by putting the blame on the Government of India. The Health Minister says that the delay in the release of funds in trying to camouflage it by putting the blame on the Government of India. Union Minister Muralidhar Mohol stated that Union Home Minister Amit Shah has their 3 programs scheduled in Pune. He will chair a meeting of his department where representatives from all 4 states will participate. Minister Amit Shah पुणे में है एक उनकी होम मिनिस्ट्री की एक विभागीय बैठक है जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उनके सीएम है, वहाँ के होम मिनिस्ट्री के सभी लोग ऑफिशियल्स वहाँ पे उसके सम्मिलित होने वाले हैं। और उसके बाद पुणे में जो हमारी जनता सहकारी बैंक है उनका एक 75 साल पूरे होने के मौके पे एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। अब उस समारोह में भी माननीय अमित भाई शामिल हो रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र शासन का एक बालेवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना का एक प्रोग्राम है, उसी में भी माननीय गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। ऐसे 3 प्रोग्राम उनके कल है। कल शाम को वो वापिस दिल्ली जाएंगे। नहीं, पहली बार मैं तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति था ये हमारा कार्यकर्ता है, वो मेरे ऑफिस में काम नहीं करता है, वो मेरे किसी सोशल मीडिया में काम नहीं करता है, एक भाजपा का कार्यकर्ता है। और उसको जिस तरह पहली बार And that's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.